So write down all invertebrates, all invertebrates were established, all invertebrates were established by the end of Cambrian, by the end of Cambrian. बेटा एक पेज छोड़ो और पहले ये बनाओ, फिर मैं आपको लिखवाती हूँ। चलिए जी, तो हमने पहले क्या कहा कि all invertebrates were established, all invertebrates were established by the end of Cambrian. डिवोनियन से नीचे क्या आता है? ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन से नीचे आता है कैम्ब्रियन. All invertebrates were established by the end of Cambrian. और उसके बाद है मैम बाय द एंड ऑफ कैम्ब्रियन, CAMBRIAN. नेक्स्ट आ जाता है एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इज ऑर्डोविशियन, एज ऑफ invertebrates is Ordovician. ब्रैकेट में लिख लो 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, the first vertebrates originated in Ordovician. First vertebrates originated in Ordovician. Next point है about 350 million years ago. About 350 million years ago, there occurs origin of jawless fishes. There occurs origin of jawless fishes which belong to cyclostomates. वीडियो फ्रीज हो गया था मैम. They belong to cyclostomates. नेक्स्ट पॉइंट है they were, ये सब हम जॉलेस फिशेस की बात कर रहे हैं. मैम विच बिलोंग टू cyclostomates, CYCLOSTOMATES, cyclostomates. They had, मतलब जो जॉलेस फिशेस थी, they had stout, STOUT, stout and strong. They had stout and strong fins. And they could move on land as well as in water. They can move on land as well as in water. Next point है they gave rise to jawed fishes. They gave rise to jawed fishes, that is both cartilage and bony fishes. इसका मतलब है ये नहीं कि बोनी फिशेस कार्टिलेज फिशेस से राइज हुई, नहीं, स्टार डाल के लिख लेना. बोनी फिशेस डिड नॉट अराइज फ्रॉम कार्टिलेज फिशेस. बोनी फिशेस डिड नॉट arise from cartilage fishes, but they had a common ancestor. But they had a common ancestor such as, जरूरी नहीं यही हो, but such as Latinaria, such as
लेटिमेरिया, जिसको कॉमनली बोल देते हैं सीलोकेन, या फिर लोब फिशेस। लेटिमेरिया और सीलोकेंथ और लोब फिशेस। इसका मतलब है दिस इज ए कॉमन एंसेस्टर ऑफ कार्टिलेज एंड बोनी फिशेस। ठीक है। It was thought to be extinct. Thought to be extinct, but its last member was caught on 22nd December 1938. But its last member was caught in 22nd December 1938 in South Africa. No living member of Latimeria is present. No. No living member of Latimeria is found presently. यह सबफाइलम है। सबफाइलम किसका सबफाइलम बेटा? मैम ये वर्टिब्रेट्स में कौन से उसमें आता था, मतलब इसका ऑर्डर क्या था मैम? एक मिनट, मैंने आपको क्या मतलब रैंक, पहली लाइन क्या लिखवाई थी, पहले मुझे ये बताओ। लेटिमेरिया कौन सी वाली इसमें? मैंने अभी आपको रिसेंट वाली लाइन। पहली पॉइंट शुरू में जो लिखवाया था लेटिमेरिया के बारे में, देखो मैं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, देखना जरा कि मैं दोबारा से बता रही थी। जॉलेस फिशेस आर द कॉमन एंसेस्टर ऑफ कार्टिलेज एंड बोनी फिशेस, राइट? देखो शुरू से करो, शुरू। इज इट ओके? यस मैम। हम जॉलेस नहीं जॉर्ड। नहीं, जॉलेस फिशेस बेटा, जॉलेस फिशेस gave rise to jawed fishes. Jawless fishes gave rise to jawed fishes, or we can say jawless fishes are the common ancestor of cartilage and bony fish. Okay? उसके बाद मैंने ना सचेस लिखवा दिया था, वो काट दो। नेक्स्ट आ जाइए लेटिमेरिया। They had a common sister, full stop. हाँ, फुल स्टॉप करो, है ना। जॉलेस फिशेस दोबारा से मैं बता रही हूँ ताकि ठीक से करो, थोड़ी सी गड़बड़ होगी है यहाँ पे। देखो जॉलेस फिशेस जो है, these are common ancestor of cartilage and bony fishes. ये फुल स्टॉप कर। उसके बाद नेक्स्ट लिखो सीलोकेंथ या लेटिमेरिया। ये ठीक करो, ये कहां पे? इट हैड stout and strong fins, can walk on land and move in water. Caught in 1938 in South Africa. No living member presently. मर गई थी उसके बाद ये। नेक्स्ट है
it gave rise to amphibians. ये ठीक करो, ये थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर गए थे, सीलोकैंथ और जॉलेस फिशेज में हम मिक्स कर गए थे. तो सीलोकैंथ या लैटिमेरिया इज द एंसेस्टर ऑफ एम्फिबियंस. ये जॉर्ज फिश जॉर्ज फिश थी बेटा. इट इज ए, हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, इट इज ए बोनी फिश. लैटिमेरिया जो है, इट इज ए जॉर्ड बोनी फिश which gave rise to amphibians. It is a, you can say it is the ancestor of amphibians. आपने एक लाइन लिखवाई थी, bony fishes did not arise from cartilage fishes but they had a common ancestor such as latinary. तो यहाँ पर हम they had a common ancestor, that is jawless fishes. okay. They had a common ancestor, that is jawless fishes. They gave rise to amphibians. ब्रैकेट में लिख लो, modern day frogs and salamanders. नेक्स्ट आ जाइए, origin of reptiles. Origin of reptiles. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, originated from primitive. Originated from primitive labyrinthodont amphibians. Labyrinthodont amphibians. They originate from primitive labyrinthodont in the beginning of labyrinthodont का क्या मतलब है बेटा? They have enameled teeth. Labyrinthodont means they have enameled teeth and have poorly developed teeth sockets. Poorly developed teeth sockets. नहीं तो amphibians में क्या होते हैं बेटा? Teeth are acrodontous. They are attached at the tip of the jaw. Humans are thicodontous. Thicodontous means teeth are embedded in the jaws. तो वो एम्फीबियंस जिनमें इनेमल आ गया और थोड़ी थोड़ी से क्या बनने शुरू हो गए, दैट इज सॉकेट्स बनने शुरू हो गए, उनको हम क्या बोल देते हैं? लेब्रिंथोडोंट एम्फीबियंस. मैंने स्पेलिंग थोड़े से गड़बड़ लिखा है, इट इज एम्फीबियंस. In the beginning of Carboniferous period, that is about 350 million years ago. Next आ जाइए, flourished through Carboniferous and Permian period. That is about 350 to 300 million years ago. मतलब beginning है तो 350, यहाँ से यहाँ तक ही कार्बोनिफेरस है ना बेटा. नेक्स्ट पॉइंट है, they flourished through Carboniferous and Permian period.
नेक्स्ट हम क्या कहते हैं? मैम द फ्लरिश के बाद दे फ्लरिश्ड थ्रू आउट कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन पीरियड। कौन से लेब्रिंथ, जो हम जो नए मतलब अर्ली रेप्टाइल्स थे उनकी बात कर रहे हैं। अर्ली रेप्टाइल्स फ्लरिश्ड ड्यूरिंग, लिख लेना, डे की जगह लिख लेना, अर्ली रेप्टाइल्स फ्लरिश्ड ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट है reptiles have polyphyletic reptiles have polyphyletic origin, that is they do not have single ancestor but had many ancestors। इसका मतलब कुछ तो आए यहाँ से, ये भी अर्ली रेप्टाइल्स भी बहुत सारे थे, कुछ ने ये बना दिया, कुछ ने ये। सरोप्सिड्स, सरोप्सिड्स बहुत सारे थे और अलग अलग सरोप्सिड्स ने अलग अलग रेप्टाइल्स बनाए। ठीक है, दैट दे डिड नॉट हैव सिंगल एंसेस्टर but they arise from many ancestors। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। reptiles are the common ancestors of birds and mammals। reptiles are the common ancestors of birds and mammals। mammals arise from synapsids। mammals arise from synapsids, also called as stem mammals। These are synapsids जो है, these are actually reptiles having some mammalian characters। These are actually reptiles having some mammalian characters। Sauropsids, SAUROP, sauropsids are the common ancestor of birds and reptiles। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है all reptiles। मैम सिनेप्सिस में भी लिखा था। क्या? Synapsids are reptiles which had some mammalian characters। Sauropsids are the common ancestor of reptiles and birds। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। all reptiles gets established, turtle, lizard, snakes, tuteras, ये सब up to Triassic। all reptiles gets established up to Triassic। They became dominant during Jurassic। They became dominant during Jurassic। और नेक्स्ट आ जाइए
many giant reptiles, many giant reptiles and toothed birds, and toothed birds such as Archaeopteryx became extinct during KT boundary. KT boundary. हम बेटा सी से लिखते हैं क्रिटेशियस, ब्रिटेन वाले के से, सॉरी जो अमेरिकन है वो के से लिखते हैं क्रिटेशियस. तो केटी बाउंड्री that is between Cretaceous and Tertiary. They became extinct during KT boundary that is between Cretaceous and Tertiary. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए. Origin of birds. Origin of birds. The toothed birds are the intermediate between reptiles and birds. Reptiles and birds. They have a beak-like birds. They have beak-like birds, but beak has teeth like reptiles. Beak has teeth like reptiles. Size like that of crow, मतलब हम toothed birds की बात कर रहे हैं. Size like a crow. Can you repeat? Size like a crow. Crow की तरह size था इनका. कॉमा करके. Possessed feathers and wings. Possessed feathers and wings, and had a long reptilian tail. ब्रैकेट में लिख लो unlike birds. Unlike birds. Therefore, toothed birds are called as missing links. Missing क्योंकि वो हम जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं, extinct हो चुके हैं. Toothed birds are called as missing links between reptiles and birds. ठीक है. It is said that modern day birds arise from these toothed birds. Which arose from reptiles. Therefore, birds are called as glorified reptiles. Therefore, birds are called as glorified reptiles. उसके बाद आ जाइए origin of mammals. Origin of mammals. It
took place in Triassic period. ट्रायसिक में बेटा साइनेप्सिड्स, पॉलिकोसोरस ये सब रेप्टाइल्स थे. जो मैमल्स आए वो आए ट्रायसिक में. थेरैप्सिड्स, the mammals originated in Triassic period. ब्रैकेट में लिख लो थेरैप्सिड्स, THERAPSIDS. Therapsids before the origin of birds. Before the origin of birds from reptiles. From reptiles. One of the more advanced therapsid, one of the more advanced synapsid is Cynognathus. मैम मोर एडवांस्ड आगे क्या बोला? One of the more advanced therapsid, THERAPSID. Therapsid is Cynognathus, जिसको हम डॉग जॉ भी कहते हैं. ये एक्सटिंक्ट है. डॉग जॉ कॉमनली हम क्या देते हैं? दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज डॉग जॉ. It lived during early Triassic. It lived during early Triassic. Size like a wolf. Size like a wolf and has many mammalian characters. ठीक है जी. So this is about evolution of animals. ठीक है बेटा. तो birds कहाँ से आए, mammals कहाँ से आए, बाकी जो आप ये देख रहे हैं that reptiles have polyphyletic origin. बहुत सारे ancestors है जिनसे अलग अलग reptiles बन रहे हैं. Is it okay? ठीक है. तो reptiles से पहले हमें थोड़े बहुत fishes के fossils मिले, amphibians के fossils हमें नहीं मिले, क्योंकि amphibians क्या है? सॉफ्ट स्किन्ड एनिमल्स है. उनके फॉसिल्स हमें ज्यादा नहीं मिले. थोड़े बहुत मिले होंगे बट ज्यादा नहीं मिले. ठीक है. फिशेस के फॉसिल्स मिले. तो फिर आगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके तो हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिले. इज इट ओके? ठीक है. सो दिस इज एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स. एवोल्यूशन हमने प्लांट्स की, एनिमल्स की. बस यही चीज थोड़ी सी जो है वो याद रखने वाली है. ये टेबल आगे का जो हमने करना है वो इजी पार्ट है, मुश्किल है. इज इट ओके? ठीक है. तो ये जो दोनों टेबल्स है ये आप 2 बार 3 बार बना के देखो आज, और फिर अगर ये याद हो गया तो फिर आगे का मुश्किल ही है. इज इट ओके? यस मैम. ठीक है. चलिए ठीक है. तो हम जो है आज का हम लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. अगली बार हम आगे का शुरू करेंगे.